बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बोर्ड पेपर पैटर्न देखेंगे और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं या इस दफ़ा आने के चांसेस हैं। सेक्शन ए के लिए जो एक्सरसाइजेज में एमसीक्यूज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आप इसमें से फुल मार्क्स ले सकें। सेक्शन बी 40 मार्क्स का होगा और उसमें आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल 13 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपने बेसिक कुछ डेफिनेशन याद करनी है और रीजनिंग क्वेश्चन याद करने हैं और कुछ स्पेशल टॉपिक आपने लाजमी देखने हैं। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में दिए हैं। तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में मौजूद है। सेक्शन बी के लिए आपने डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ ग्राम एटम और हाउ यू विल आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाई इज़ द एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ए रिएक्शन। इस तरह के सवालात लाजमी देखने हैं। आपकी आसानी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद करें। फिर कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जिन पे आपको नोट लिखना होगा, वो भी आप देख लें। और सेक्शन सी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन लाजमी याद करें। डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, डिस्क्राइब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड with reference to Wallace bond theory. What is Dalton law of partial pressure? Define boiling point. Why food is cooked rapidly in pressure cooker? Differentiate between isomorphism and polymorphism. Define buffer solution. How it resists a change in pH. What is the relationship between Kc, Kp, Ks and Kn? Apply a Pauli exclusion principle and Hund's rule for carbon and nitrogen atom. How the size and shape of a molecule affect the strength of London dispersion forces? What is corrosion? Give the chemical formula of rust. Differentiate between internal energy and enthalpy. Define law of mass action. Derive its mathematical expression. Differentiate between continuous and line spectrum. Also define spectrum. Why O2 is paramagnetic? Draw diagram. What is corrosion? How it can be prevented? What is difference between molarity and molality? What is percentage composition? Why the actual yield is always less than the theoretical yield of a reaction? Molecular orbital diagram for N2 and O2. Prove that PV is equal to nRT, ideal gas equation. Derive unit of R in term of decimeter cube torr per mole per Kelvin. Difference between amorphous and crystalline solid. Why the theoretical yield is always less than the actual yield is always less than the theoretical yield of a reaction. State Boyle's law, how it can be proved experimentally or experimentally verified. Describe Raoult's law. Why CO2 is linear and H2O molecule has angular structure? Why sigma bond is stronger than pi bond? State Charles' law, verified it experimentally. How electroplating can be carried out? तो ये तो थे सेक्शन बी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
सेक्शन सी के लिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर इट्स टाइप, explain Bohr atomic model, derive an expression for radius of hydrogen atom and energy of electron. What is Le Chatelet principle? Apply it for pressure and temperature. Define order of reaction. What are first, second, third order reaction? Gram's law of diffusion and its experimental verification. Derive van der Waals equation. What are ideal and non-ideal gases? What is Le Chatelet principle? What are quantum number? Describe azimuthal quantum number with example. Difference between amorphous and crystalline solids. What is mole fraction? Explain with example. Explain electroplating. What is electrolytic cell? Give 4 advantages of electrolytic cell. What are properties of cathode rays? Write down postulate of Planck's quantum theory. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन अक्सर इस तरह से भी होता है, 3 टॉपिक दिए होते हैं, 2 पे आपने नोट लिखना होता है, तो उनके लिए आप ये टॉपिक लाजमी देखें। लेवलिंग अफेक्ट, बोर्न-हेबर साइकिल, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, राउट्स लॉ एंड रेट ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एवापोरेशन, एवोगेड्रो लॉ, प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, डाइपोल मूवमेंट, anisotropy, एलोट्रॉपी, हिसेस लॉ एंड मोल। तो स्टूडेंट ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और स्पेशल टॉपिक। मज़ीद इसी तरह की वीडियो और एग्ज़ाम के हवाले से गाइडेंस के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।